हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2022 क्लास 12th सब्जेक्ट होम साइंस इन इंग्लिश मीडियम। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खासकर बनाया गया है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। कुछ से प्रश्नों को एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश मीडियम में, बाकी जो है आप लोग स्वयं जो है इसको नोट करके अपने घर पे ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके सहायता के लिए वीडियो बनाया गया है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खासकर। क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। वर्क एथिक इज, आंसर है रेगुलरिटी। दे कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग राइस, ऑल ऑफ दिस। टास्क सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू सेविंग टाइम एंड एनर्जी, आंसर है इसका। इज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का आंसर आएगा ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। द हेड ऑफ to body ratio in middle childhood is 1/6. Question B, fill in the blanks. By eating balanced food and using it properly, nutrition level is general. The money which is kept aside from present incoming for future requirement is called saving. Should be kept safe, it is the proof of purchase of the product bill आएगा। Adults and children generally do not depend on grandparents for sexual information. Clothes keep you warm in winter, woolen. Write true or false statements. First है, food is cooked by hot air while baking, truth है। Vitamin C is produced in our skin with when there is open sunlight on the body, truth है। थर्ड, चैन ऑफ कॉन्फिडेंट पेरेंट्स आर कॉन्फिडेंट टू, ट्रूथ है। सभी ट्रूथ है दोस्तों, इसमें ट्रू है सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 2 marks. Write the policy habits required to improve your performance as a student. Following are the habits required to improve your performance as a student: loyalty and honesty, truthfulness, self-respect and respect for others, respect for time. What things will you keep in mind while making tiffin for school children? Question 4, write 2 examples of disordered and semi-dissipative substance. Perishable substance, milk, fruits, green vegetables. Semi-perishable substance, oil, semolina, maida, pickle. Question 5, give example of space saving furniture. Following are the space saving furniture: folding bed, boxed bed, divan, sofa bed, stretchable bed. Question 6, define child labor and give 2 reasons. Child crime is the act of violation of law by young children by under 16 years of age and girl below 18 years of age, and they cannot be punished by law. What is it necessary to do laundry? Question 18 to 13 are short type answer question answer which carries 3 marks. Write 3 difference between label and printing. नोट कर लीजिए दोस्तों। लेबल एंड प्रिंटिंग में 3 डिफरेंस। क्वेश्चन 9, write any 3 features of cognitive development of an 11-year-old child. नोट कर लीजिए क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन 10, write 3 points to be kept in mind to save fuel at home. Question 11, name the major institution of investment. Following are the major institutions of investment: bank, post office, provident fund, life insurance, unit trust of India, stock exchange, private companies, real estate of jewelry.
Question 12. Differentiative between deep and shallow frying. Deep frying. In this method, the food is immersed in a pan or deep frying pan in hot oil till golden brown. A special type of a pony cotton is used to remove excess grease after the food is cooked. Shallow frying. In this method, the food is cooked in a shallow version like a tawa or frying pan. Question 13. Write any two examples of self-employment and paid employment. Question 14 and 15 are very short type question carrying 4 marks each. State the two main methods of washing and also their suitability for clothes. Scrubbing clothes first है, second है washing by rubbing with a brush. This is the most common method of washing household clothes. This method is generally adopted for washing stronger and more dirty clothes. The following methods are used to washing clothes by rubbing them. Third है washing clothes by spreading and rubbing on a wooden plank. Washing clothes by suction washer. What is a smear? How do you spot a smudge? कलर, स्मेल, टच, इसके पॉइंट है, पॉइंट वाइज नोट करना है आपको. क्वेश्चन 15 है डिफाइंड एंड क्लासीफाई रिसोर्स. रिसोर्स आर टू टाइप, ह्यूमन रिसोर्स, इन ह्यूमन रिसोर्स. What are three main drivers in the management process? Following are the three motivators of manager. Values, standard, goals. 16 and 17 are long type question, each question mark 5. Describe the precaution while using power tools at home. Precaution while using electrical equipment. Never touch any electrical appliance with wet hands and feet. Question. Name 5 factors to be kept in mind while choosing the home appliance. Explain. Factors to be kept in mind while choosing home appliance. Question 17. Make a table of the physical changes that take place in boys and girls during adolescence. तो नोट कर लीजिए. कंपेयर, गर्ल्स एंड बॉयज के बीच कंपेयर. Mention the method of discipline used by parents in adolescence. Question 18 and 19 are long type question. Question 18 है what are the precautions you will take to avoid loss of nutrition preparing palo mixed with vegetables. इसके बाद है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द फॉलोइंग मेथड ऑफ कुकिंग. स्टूइंग, स्टीम कुकिंग, पीलिंग. स्टूइंग, कुकिंग बाय स्टीम. डायरेक्ट मेथड,
indirect method, pressure cooking. Question 19. What will you keep in mind while buying fabric for curtains? Moisture absorption, thermal conductivity, tautness. What to keep in mind while buying ready-made suits? Design of a real fit, workmanship, price. तो इस प्रकार दोस्तों है ना इंग्लिश मीडियम के सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर आप लोग जरूर देखें, मेरे चैनल में दोनों मीडियम में अपलोड है दोस्तों। ठीक है, कोई कठिनाई आने पर कमेंट जरूर करें, उसका वीडियो जरूर बनाया जाएगा। परीक्षा तक आपको हेल्प किया जाएगा, परीक्षा तक इसका पढ़ाई अच्छे से कीजिए।